It's visible. Okay, so we are going to talk about polymerization in today's class, and I told you that we have two types of polymers, addition polymer and condensation polymer. And in this chapter, actually, we need to talk about formation of polymers, and secondly, we need to talk about some properties of the polymer, that why we need to use these polymers, right? So some properties of polymer and formation of polymer we need to talk about. And the first one is addition polymerization, that you already know because you already talk about this in AS alkenes chapter. Or you need to know that all the addition polymers are due to the presence of carbon-carbon double bond. And you need to remember that it is addition polymer. So the name is showing that there is no other than one polymer. Every monomer that are present over there, they are just combined together and they will give you one product, one polymer. So there is no loss of a single molecule in terms of water or HCl molecule. Such type of molecules are not going to be eliminated from these type of polymerization. We just have a single monomer. A lot of monomers, like if you have 1,000 or if you have 2,000 monomers of a simple alkene, so it will give you a polyalkene with a single product, no other than a single product. उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है भाई? Yes, sir. So this is a thing that you need to keep remember, and also you need to keep remember कि यहाँ जो product बनती है वो resultant polymer होता है और वो contain करता है repeating units. वो contain करता है repeating units. ठीक है ना? तो जो आपका molecule का structure होता है उसी तरह का structure बनता है without double bond. So let's talk about something like alkenes. For suppose if you have ethene, so this is 2 carbon alkene, so this is ethene. For suppose if you have more than one molecule of ethene, definitely we have a lot of molecules over there that are going to be combined together. You're just giving them conditions. So what happened? Just look at over there. For suppose this is what I'm just drawing for 2 molecules. For suppose we have 2 different molecules of ethene over here, we just provide them conditions. So hoga kya aapke paas when we provide them conditions? So this double bond breaks, this double bond breaks. Definitely when the double bond is going to be breaking down, that 1 electron from this carbon and the 1 electron from this carbon is going to be free. 1 electron from this carbon and 1 electron from this carbon is going to be free, and then they start bonding together. So जब ये bond करेंगे तो it will be like this कि ये carbon इस वाले carbon से bond कर लेगा like this, and the hydrogens are remain on their places without being changed, right? So this is what, this is the structure of polymer, right? This is the structure of polymer. This is ethene molecule, and this is known as polyethene molecule, right? This is polyethene. You need to keep remember that this extended bond is very important to show. You need to show these extended bonds because this is actually showing you that the molecules are continue. They are just connecting continue, right? और इस तरह के पता नहीं कितने molecules आपस में connect हो जाएंगे. And due to this structure, ये एक structure molecule का, ये दूसरे structure है molecule का, तो this is known as repeating unit. I just draw over here 2 repeating units. ये 2 repeating units हैं. आप एक भी बना सकते हो और आप 3 भी बना सकते हो और आप उससे ज्यादा भी बना सकते हो. It's all depend on the examiner what they are asking for. अगर वो 1 यूनिट पूछ रहा है तो 1 बनाए, 2 पूछ रहा है तो 2 बनाए, 4 पूछ रहा है तो 4 बनाए. All right, everyone? Yes, sir. And for suppose आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास प्रोपीन है. यहाँ प्रॉब्लम होता है बच्चों को. For suppose we have propene. देखें, this is actually the structure of propene. This is actually the structure of propene. अगर इस structure को आप polymer में convert करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे? It would be difficult for you to do this. So अगर हम इसको आसान बनाना चाहें तो आसान बनाने का एक तरीका ये है कि पहले मैं इसको standard form में लिखूंगा. ठीक है ना? Standard form is such form in which we just have carbon and carbon double bonds. और कुछ नहीं होना चाहिए. तो जो 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, पहले तो मुझे वो बनाना है. ठीक है, इसके अलावा कोई कार्बन इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए. अब बताएं, ये वाला जो कार्बन है आपके पास, इस वाले कार्बन में आपके पास देखें 2 हाइड्रोजन है इंडिविजुअल. ठीक है ना? तो मैंने ये 2 हाइड्रोजन इंडिविजुअल इस कार्बन पे बना दिए. और अगर आप दूसरे वाले कार्बन को देखते हो तो इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये मैंने 1 हाइड्रोजन इस पे बना दिया. और जो इसका दूसरा वाला बॉन्ड है बच्चों, वो कनेक्टेड है कार्बन से, और इस कार्बन पे एक्चुअली 3 हाइड्रोजन है. तो मैंने इस वाले बॉन्ड को नीचे भेजकर CH3 बना दिया. इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir.
This is what? Propene. So I think this is a correct formula of propene. We can even draw propene like this. And also you need to keep remember कि मैं monomer बस एक ही बना रहा हूँ, अब दो बना के नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि we know that a lot of monomers are over there that are going to combine together. अब आपने करना क्या है? You just need to draw this structure twice or thrice, whatever. जितनी मर्तबा आप बनाना चाहें. मैं 2 मर्तबा बना लेता हूँ इस स्ट्रक्चर को. एक रिपीटिंग यूनिट हो गया ये दूसरा रिपीटिंग यूनिट मैंने बना दिया. This is what? 2 repeat units. We just need to combine them without double bond or extended bond दिखाने हैं हमने. ठीक है ना? Double bond मिटा दिया और combine कर दिया, and now this is what? Polypropene. Is that right, बच्चों? Yes, sir. Right. Then we have 2 types of butene as well. So it's your turn now. Now you need to show me how can you form polybut-1-ene and polybut-2-ene. Just try to do this. Draw but-1-ene, polybut-1-ene, and polybut-2-ene. Jaldi se koshish kare. Then I would just want to show someone something more, right? Okay, so every one of you, अगर आपने बना लिया तो that's very good. अगर नहीं बनाया तो check कर लें कैसे बनेगा. But-1-ene should be like this. This is a double bond on the first carbon, and then 2 more carbons over here like this, right? So this is but-1-ene. If you want to write C2H5 over there, that's fine. You can write over there as well. And for this, the polymer, you just need to repeat this without double bond. If you want to draw 1 repeat unit, you can. If you want to draw 2 repeat unit, too, you can. Right, so I'm just drawing 1 repeat unit right now. So this is polybut-1-ene. This is polybut-1-ene. Right, if you talk about polybut-2-ene, so this is but-2-ene, double bond on the second carbon. So this is polybut-2-ene. If you, oh sorry, this is but-2-ene, and if you want to draw the structure of this, so this will be the polymer. You just need to draw the structure without double bond and the extended bonds. So this is polybut-2-ene. This is polybut-2-ene. All right, बच्चों. सर but-2-ene में double bond second पे कैसे हुआ? You can see this. This is first carbon. This is second carbon. From here, if you want to see this 1, this is 2. Second carbon right here. Okay. Yeah. One more thing is this, बच्चों, okay, for suppose I just give you the polymer, so you can even drive the monomers from this as well. For suppose this is one of the polymer, just like this. This is one of the polymer. If I ask you to name this compound, you have find out the monomer of this compound. So how can you do this? So it is again the similar thing. What you need to do, you need to find out the repeating unit first, right? And the repeating unit is always of 2 carbon. So this is repeating unit, and you can even see this कि आपके पास H जो है हर एक कार्बन बाद रिपीट हो रहा है. इस तरह भी आप निकाल सकते हैं. ये मॉलिक्यूल 2 मरतबा रिपीट हुआ है. सो जो मॉलिक्यूल 2 मरतबा रिपीट हुआ है उसको आप 1 मरतबा लिख लें. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. जब आप उसको लिख लें तो आप उसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दें. सो ओवर हियर दिस इज डबल बॉन्ड. सो दिस इज द मोनोमर जो कि आपके पास यहाँ होना चाहिए. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मोनोमर? यू कैन इवन फाइंड इट आउट लाइक दिस कि हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये चौथा कार्बन. इट इज लाइक दिस. और इस वाले कार्बन पर आपके पास CH3 लगा हुआ है. What is the name of this compound? This is actually but-2-ene. This is actually but-2-ene, and also 2-methyl but-2-ene. Right, बच्चों? जी सर. सही. Any problem to any one of you? No, sir. चलें तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, जो कि आपके पास क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है. सो नेक्स्ट इज कंडेंसेशन polymerization. And in condensation polymerization, बच्चों, there is actually, you can say that the molecules, the monomers actually link together to form a long chain, right? Again, the polymer monomers join होंगे, एक बड़ा polymer बनाएंगे. And you need to keep remember this, that in
in each of the linkage, right, there is loss of molecule as well. There is loss of molecule as well. And that is why this is known as the condensation polymer, right? There is a loss of one molecule. It may be H2 or it may be HCl. Any type of molecule can be eliminated from there. So this is, you need to keep remember over here, there is a loss of small molecules. There is a loss of small molecules in this type of polymerization, right? And actually condensation polymerization is of two types that we need to discuss. The one is polyester that we need to talk about, and the one is polyamide that we need to know. Right, bacho? Yes, sir. Let's talk about the one of them, or how can we solve this. So let's talk about this. You need to keep remember that carboxylic acid is used as a monomer over here, right? In both of them. For suppose if you talk about polyester and if you talk about polyamide. So if you remember बच्चों कि ester बनाते वक्त you were using what? Carboxylic acid. आप लोग क्या use करते थे? Carboxylic acid. और क्या use करते थे बच्चों? Alcohol. Carboxylic alcohol, when they react together, they will form what? Ester. So same over here. In the polyester, we need to have carboxylic acid and alcohol as well. But this time we should have dicarboxylic acid and dialcohol. So they will form polyester, right? And for polyamide, if you remember in the last few classes, we talked about amides. So over there, we were using what? Carboxylic acid and amine. Carboxylic acid and amine. So if you use these two, so you will have what? Polyamide, right? अगर आप सिर्फ carboxylic acid और amine मिलाएंगे तो amide बन जाएगा. If you are using dicarboxylic acid and diamine, so you will have what? Polyamide, right? When they are just going to react together, they will eliminate water molecule. They will eliminate water molecule. So this is the elimination of water molecule, or you can say that the water molecule is going to be out from here. And as you remember in the last few classes, we were talking about acyl chloride in place of carboxylic acid. So you can even use acyl chloride for the fast reaction along with amine. So it will form what? Amide also. But in this formation, you will see that not H2O, but HCl molecule eliminate. Same as it is over here, you can use this in place of carboxylic acid. You can use acyl chloride for the fast reaction along with the alcohol. So you will have bacho HCl molecule that will eliminate in place of water. Is that clear, bacho? Is that clear, bacho? Yes, sir. So let's talk about some examples. Let's talk about some examples, right? So first of all, you need to keep remember that what is the linkage of polyester. If you talk about polyester, so there should be a linkage of this type of bond. ये link होना चाहिए आपके पास. इस type का अगर linkage आपके पास होगा, so it should be polyester. और अगर मैं इसको complete करना चाहूँ, तो इसको complete कुछ इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग chain होगी कार्बन की, ठीक है ना? और यहाँ पर कार्बन की अलग chain होगी, ठीक है? It would be what? It would be polyester. इस तरह का जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास polyester कहलाएगा. और अगर आप polyamide की बात करते हो तो polyamide के अंदर भी आपके पास यही सीन होना चाहिए. This is the amide linkage. This is the amide linkage. तो ये amide linkage आपके पास होना चाहिए. अगर ये linkage वहां पर है, that means it is polyamide, right? Yes, sir. ठीक है. So there are two different ways of the formation of polyester. So let's start with the first one, right? Actually polyester में भी हम दो अलग अलग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम polyester की बात कर रहे हैं. The one is polyester. We are just going to start with polyester. You can even make it from carboxylic acid, or you can even make it from alcohol, or carboxylic acid and alcohol and acyl chloride. So I'm just going to start with carboxylic acid. You should have a molecule. आपके पास एक ऐसा molecule होना चाहिए जिसके दोनों तरफ carboxylic acid होना चाहिए. This would be known as dicarboxylic acid. This is what? Dicarboxylic acid. और एक molecule आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके दोनों तरफ क्या हो बच्चों? Alcohol. So this is known as
diol, right? This is known as diol, and you need to keep remember that all the time, carboxylic acid lost its OH from both side and alcohol lost its H on from both side. तो ये आपके पास जब ये लॉस करेंगे तो बाकी जो मॉलिक्यूल होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन. So you can see this, जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना OH लॉस कर दिया, so it would be like this, would be like this. और आपके पास अल्कोहल ने जब अपना H लॉस कर दिया, so it would be like this. और ये आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बना लेंगे बच्चों, पॉलीएस्टर बना लेंगे. एंड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन इट विल एलिमिनेट वन H2O मॉलिक्यूल, ये H2O बनकर निकल जाएगा. राइट राइट बच्चों? सही है सर. Yes, sir. Any problem? नहीं सर. एक तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ. कैसे बड़ा कर सकते हैं हम इसको, मैं एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता हूँ यहाँ पर. एक और कार्बोक्सिलिक एसिड मैं यहाँ बना लेता हूँ और मैं एक और अल्कोहल यहाँ बना लेता हूँ. राइट तो आपके पास होगा क्या, आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल और बढ़ जाएगा. आप देखें ये आपस में वाटर बना लेंगे, ठीक है. सो इट वुड बी लाइक दिस, it would be like this, right? और उसके बाद आपके पास it would be like this, right बच्चों? Right? Yes, sir. Will be the 2 repeat unit now, right? और क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पानी का निकला है, एक मॉलिक्यूल यहाँ निकला है, तो this will be plus 2H2, right? एंड इवन जब ये आपस में मिलेंगे तो और भी मॉलिक्यूल यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, तो और भी निकलेंगे. बट राइट नाउ हमने 2 रिपीट यूनिट बनाया तो मैंने यहाँ से 2 ले लिया, ठीक है. The important thing to understand over here is this, कि ये किस टाइप का पॉलीएस्टर है. जरा देखिए, ये आपके पास ये लिंक है, एस्टर का लिंकेज इस तरफ है, ये दूसरा वाला एस्टर का लिंक भी इसके आमने सामने है, तीसरा वाला इसके अपोजिट है. If you focus over here, बच्चों, so these linkages of ester are actually opposite to each other. They are just like shoe pairs. What do you say? They are like shoe pairs, right? One is right and one is left. One is right and one is left, right? Sir, right? नहीं सर, कैसे समझा देंगे? देखो ये इसका जो शेप, इसका जो फ्रंट है ये राइट हैंड साइड पर है, जबकि इसका फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड पर है. इसका जो फ्रंट है ये राइट हैंड साइड पर है, जबकि इसका है लेफ्ट हैंड साइड पर. तो दे ऑल आर अपोजिट, एक डायरेक्शन में नहीं आ रहे, अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे, राइट? सर वापसी समझा दीजिए, समझ नहीं आया. इसकी डायरेक्शन देखें आप, इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं? जी सर है. बस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और कुछ भी बात नहीं कर रहे. अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. डायरेक्शन इनकी कैसी है, अपोजिट है या नहीं है? बस मुझे ये कंफर्म कर दें. बस यही आपने देखना है. इफ द डायरेक्शन इज अपोजिट, इफ द डायरेक्शन इज अपोजिट, देन यू वुड से दैट कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आर्टिफिशियल कंपाउंड, ये आपके पास आर्टिफिशियल पॉलीमर है. सो यू कैन से दैट दिस इज एक्चुअली artificial polyester. This is what actually artificial polyester. This is actually what बच्चों, artificial polyester. Is that clear or not? सही है सर. Yes, sir. ठीक है. Now let's talk about the next one. अब देखो इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल बन जाए. आपके पास यहाँ पर नेचुरल भी बन सकता है, लेकिन मैं नेचुरल समझाने से पहले मैं आपको एक मेन इसकी एग्जांपल समझा दूं. मैंने अभी अब जस्ट जर्नल समझाया आपको, ठीक है ना. ये जो आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर्स होते हैं ना, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर आपके पास जो पॉलीएस्टर है ना, वो कौन सा है आपके पास? मोस्ट पॉपुलर पॉलीएस्टर जो है आपके पास वो है पैट. This is the most popular polyester. इसका नाम है PET, polyethylene terephthalate, right? This is PET. Or you can even say that
टेरलीन ऑल्सो। टेरलीन और पैट, ये दो अलग अलग आप कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है इस्तेमाल होती हैं इन प्लास्टिक बॉटल्स। ये इस्तेमाल होती हैं कहाँ? प्लास्टिक बॉटल्स में। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला आर्टिफिशियल पॉलिएस्टर है। तो इसकी बात करते हैं, पहले इसकी एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं पहले ना। इसकी एग्जाम्पल क्या है? बनेगा ऐसी, बस अब मैं ब्लॉक की जगह पर क्या बनाऊंगा? मेन चीज बनाऊंगा, ठीक है ना। अब ब्लॉक की जगह पर मैं आपको एक मेन चीज दिखाऊंगा। So what is the main thing over here? This is what? Terylene. You can even call this as polyethylene terephthalate. They both are the same things. Alright? अब हम इसको बनाएंगे। क्यों? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है, ये हम खुद बनाते हैं लैब के अंदर। ये कंटेनर्स फॉर फूड के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये डिस्पोजेबल कप्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बॉटल्स में इस्तेमाल हो सकता है, ये डिस्पोजेबल कप्स में यूज हो सकता है आपके पास। ये जो है आपके पास फूड कंटेनर्स के तौर पर यूज हो सकता है। ये आपके पास आर्टिफिशियल, और यू कैन से दैट ये सिंथेटिक फाइबर है आपके पास, ठीक है भाई। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और आजकल के जमाने में बहुत, आप जहाँ प्लास्टिक यूज हो, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक्चुअल फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये फॉर्म होता कैसे है। सेम यही प्रोसेस होगा, बस अब मैं बॉक्स की जगह पर मेन कंपोनेंट यूज करूंगा, ठीक है ना। तो आप देखिए मेन कंपोनेंट क्या है इसका, आपके पास बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन रिंग के दोनों एंड्स पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होता है, ठीक है। और एक आपके पास क्या होता है, 1,2 डाइओल होता है आपका, इथेन डाइओल होता है आपके पास, यानी 2 कार्बन है, इथेन है, और इसके दोनों एंड पर आपके पास क्या लगा हुआ है, इसके दोनों एंड पर आपके पास लगा हुआ है OH, ठीक है। देखिए कार्बन कार्बन, इसके यहाँ पर H लगे हुए, ये H लगे हुए, और इसके दोनों कॉर्नर पर OH लगा हुआ है। तो सेम पोजीशन, वही सारी चीजें, बस बॉक्स की जगह पर मैंने आपके पास यहाँ लिख दी है मेन इंग्रेडिएंट्स। अब आपको पता है क्या होता है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपना OH देगा, अल्कोहल अपना हमेशा H देगा, तो ये रिमूव हो जाएंगे। इनको कंपाउंड, बाकी जो आपके पास रेडिकल्स हैं इनको आप ज्वाइन कर कर पॉलीमर बना सकते हैं। तो ये क्या पॉलीमर बन जाएगा आपके पास, देखें, इट शुड बी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से टूट गया, फिर ये आपके पास बेंजीन रिंग इस पे अटैच हो गया, ठीक है ना। इस बेंजीन रिंग के साथ कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का डबल, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, बस, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, ये अल्कोहल अटैच हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैट, along with definitely it will produce water molecule, right बच्चों? सही है सर, ठीक। Any problem? लेकिन बस लिख लो। ये आपको लिखना है जी। Yes, sir. one more thing that you need to keep remember over here, आप इसको अपने पास लिख लो। For suppose you have n carboxylic acid, अगर आपके पास कितने भी carboxylic acids हैं, and you have n number of alcohols, आपके पास n alcohol है and n carboxylic acid है, so you need to keep remember the number of molecules of water forms are 2n minus 1. This will be the number of water molecules formed. ठीक है बच्चों? सही है सर। तो 2n-1 का मतलब इस फॉर्मूले से आप निकाल सकती हो कि ये मैंने बना दिया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि जब भी नेचुरल पॉलिएस्टर होगा ना, उसमें सीन क्या होगा, हमेशा एक ही मोनोमर होगा हमारे पास, और एक ही मोनोमर को बोलते हैं कोमोनोमर, जिसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे। यू कैन सी दिस कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद है और अल्कोहल भी एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद है। दिस इज हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन इट, तो ये कोमोनोमर है। इस तरह के बहुत सारे मोनोमर्स अगर आपके पास होंगे तो हमेशा की तरह अल्कोहल हमेशा अपना H देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपना OH देगा। तो जब ये मिलेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है भाई। अब देखें मैंने इसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे एक डायरेक्शन में, सारे के सारे एक डायरेक्शन में, तो ये बात बता रहे हैं कि ये आपके पास नेचुरल पॉलिएस्टर है, नेचुरल पॉलिएस्टर। और जब कभी भी आपको डायरेक्ट पॉलिएस्टर मिल जाए और आपसे बोलें कि बताओ इसका मोनोमर बताओ, तो पहली चीज आपने ये देखनी है कि उनके सारे फंक्शनल ग्रुप एक जगह तो नहीं है,
सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे तो नहीं है, सबकी डायरेक्शन सेम तो नहीं है। जब सबकी डायरेक्शन सेम होगी तो पहली बात आपको जो याद आएगी वो ये आएगी कि भाई इसका एक ही मोनोमर होगा, और वो मोनोमर में एक साइड पे एक फंक्शनल ग्रुप और दूसरी साइड पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। और अगर अगर उसकी डायरेक्शंस अपोजिट हुई, जैसे अभी हमने पिछली बार किया था, तो आप समझ जाएंगे भाई दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। एक मॉलिक्यूल में, एक मोनोमर में दोनों फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, दूसरे वाले में दोनों अल्कोहल होंगे। और इसकी एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में जो मौजूद है वो है लैक्टिक एसिड। सो यू कैन सी दिस, आई जस्ट रिप्लेस द बॉक्स बाय दिस। ये हटा के, मतलब बॉक्स हटा के मैंने ये लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है भाई, यस सर। चलें इसको आप अपने पास लिख लें, और पॉलीएमाइड्स जो है हम इंशाल्लाह कल की क्लास